So namaskar everybody. Welcome you once again and thank you for joining Kosam classes. तो शुरुआत करते हैं मनीषा जी से. Hello मनीषा जी, नमस्कार. नमस्कार. Hi. Hi. So कुछ बताइए आपके बारे में and why you are joining Kosam class. Okay. So basically, as you saw, my name is Manisha Dasi. My father is from Anantnag and my mother is from Srinagar. मैंने क्लासेस इसलिए ज्वाइन की है. नंबर 1, मुझे कश्मीरी समझ तो आती है लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है. घर पे जो रूटीनली बात करते हैं आई कैन अंडरस्टैंड इट 100%, बट वो आमतौर पे जो लैंग्वेज यूज होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेशलिटी कुछ खास नहीं होता है. रोजमर्रा की बातें होती हैं जिसमें कई बार बॉडी लैंग्वेज और एडिड क्यूज से समझ सकते हो कि क्या बोला जा रहा है. बिल्कुल. That is one thing which I wanted to understand better. More important would be there are a lot of Kashmiri patients who come to me because I'm a doctor. तो कई बार बात करने में कई चीजें रह जाती जो वो I would also want to understand and they want to communicate, which I'm not able to understand. So I need the help of a caregiver जो मुझे बता सके कि इसका क्या मतलब है. So on these two fronts, I want to improvise so that first of all I should know my language. It's my language and I'm supposed to know it. And secondly, my patients can have, like, they can get benefited out. Wow, that's great. Actually, the intent is very good. By any chance, have you read from BSF school? Absolutely. I think that I know you. So. Okay. Chalo, which batch? Yeah. We can do that. I was in 2003 pass out, 12 pass out, 2003. So I'm 2001 pass out. Ah, right. I think you were my senior. Yes, that's what I remembered. Chalo, where are you based right now as a doctor? That's how it is. So I am at right now I stay at Noida and I work at Max Hospital Vaishali Ghaziabad. I'm a kidney specialist. Oh wow, great. Good to know. Good to know. Good to see you actually. Yeah, I'm also excited. Yeah, same. I'm excited to join the classes. Thank you for joining. Okay, Meenakshi ji, I think sorry, आपने क्या नाम बताया था? Saisha, yes. Saisha. तो साइशा आप बताइए आप क्यों कश्मीरी सीखना चाहते हैं? I can understand most of it fluently, but I can't speak it properly. Okay, so Saisha, where are you based? Where are you living? Australia. Australia. Okay. So at your home, somebody talks to you in Kashmiri? Yeah. Your parents? Yeah, my parents. So do you try and speak with them a little bit? Yeah. Okay. So you're born and brought up in Australia? Yeah. Okay. Isn't it too late for you or the timings are okay for the class? It's okay. It's only 8:30 at the moment. Oh, okay. 8:30. That's yeah, good. we are in Western Australia. We are just 2.5 hours away. Oh, okay. Same like us. We're not in Eastern Coast. We're not in East Coast. No. Okay, great. Okay, then this should work. Great. Yeah, that's why I just chose this time. Good. And being Saturday as well. Yeah, of course, it's Saturday, so. Yeah. So which class do you study, Saisha? Which year? Year 4. Year 4. Okay, is it like 4th grade? Yeah, okay. Great. Welcome to Kosam class. Then we have Urvi ji. Hi, good evening. Hello. बताइए कुछ आपके बारे में. I'm in grade 12. I'm actually I'm taking my boards this year. Like I have my boards going on. I've got left with my last board exam, and I'm an upcoming bachelor student at the London School of Economics. Wow. For BSc Economics, and my mom's Kashmiri, so I thought if I learned Kashmiri, it might help me get a little closer to my culture, help me understand it better. So good, and it might impress your mom, I would say. That's we're in hopes of that. Yeah, moms are a little difficult to impress when you grow older, but yeah. Good to know. Welcome.
Devyanshi and Vatsal, हमारे favorite students from previous batch. Namaskar, Mara. Namaskar. Kuta hai chute koshur. Kamzat. Kam zyada. One yat batches mas kya shu hichun? Pura chua. Pura hichun. Very good. So these are the kids from our previous batch. They're joining us back in this batch. So welcome Devyanshi and Vatsal. Tarosh ji, namaskar. Priya Mara. Hello, Tarosh ji. Namaskar. Namaskar. कुछ बताइए आपके बारे में. Hi. Where are you from? I am currently in Austria. I'm doing my bachelor's in electrical engineering. Okay. There in Kashmiri. So it's always been there's always been a little guilt that I've not been able to grasp the language fully. Mm-hmm. It's the same as probably like Dr. Manisha. It's just that I'm able to understand what's happening, but I'm not able to converse fluently. Yeah, and that's about it. And I feel that it's high time probably I should learn it. Yeah. So somebody like in your house, parents, they all speak in Kashmiri with you, or? Well, when my daddy comes home, it's usually the case. When mummy papa's at home, now it's a little hard for my daddy to come because my parents have moved to France. Yeah, but when I'm in India with Dadi and Nani, it's in Kashmiri. So for Kashmiri. Good. Yes, yes. Chalo, good to know. Thank you for joining. Namaskar, Krishna ji, Krishna Sharma. Hello. Hi. Hi. Tell us about you and your motivation behind learning Kashmiri. Yeah, I'm in America and my mother's family is Kashmiri, but I don't know any Kashmiri. I don't know any Hindi either. And so I really, like they were saying earlier, feel like I'd love to connect with that whole side of my family because I really love them and relate to them. Most of them are also in India. So when I do get to visit them, I'd love to speak Kashmiri with them. Oh, that's good. That's good. Yeah, most of us, I think, are here either to speak in Kashmiri with our families or grandparents and all. But I feel like, yeah, it's important to learn and be close to your mother tongue because that's our first language. English, Hindi is not our first language. Kashmiri is our first language. So it's important to learn Kashmiri. Yeah, I'd love to read the poetry too, because I know there's a lot of poetry. Oh, yes, there is. Well, you will get there. Once you go through the basic lessons, then obviously you will get to the poetry as well. Great. Welcome to Kosam class. And we have Virendra ji. Namaskar, Virendra ji. Hello, namaskar, Virendra ji. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा और वीडियो ऑन करना पड़ेगा. नमस्कार. हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार महाराज. जी मारे मारे पन्ने 12 ones and महाराज नोएडा पैटर्न इंडिया मगर बहुत इंटरेस्टेड शारदा लैंग्वेजेस में. मगर वन रात परान मैसेज सुबह पोरम आत मज स्टूडेंट्स शारदा खतर कम. जी महाराज ऑलरेडी तगान हेचमुत जानान वन गो मे दो पर तो हेच बेमा मेल के आत्मा मेल एडिशन उर्दू थोड़ा भगवान बार गई तो का जाय पे which is Singapore bit, but thank you. Okay, Bharat, namaskar. Thank you for joining. Gautam ji, namaskar, Gautam ji. Namaskar. Please अपना video on कर दीजिए. Thank you. Because meet and greet makes more sense with the face-to-face conversation. Yes, now I can see you. Right. Ji, tell us about yourself, your inspiration behind learning this language.
Actually, my grandfather was Kashmiri, and long back he moved from the Kashmir to a small, state called Bihar. So I born and brought up over there, and I was very, always looking for to learn the Kashmiri because of my roots are over there, and that is my inspiration to learn this Kashmiri. And of course, the hope is that one day we should go and live peacefully there. Kashmir is another dream we all are looking basically. So currently, I'm in Pune. I've done my graduation from Pune University and working as a software engineer here. So Okay. yeah, this is a small introduction about myself. Great. Welcome to Kosam. Welcome to our family, Kosam family. Namaskar, Shrishti ji. Hello, namaskar. Sorry, मैं अभी travel कर रही हूँ, मेरे को 2 minute दे दीजिए. I'll just reach home in 2 minutes. ठीक है. Okay. Namaskar, Manasi ji. Sorry. Hello. Hello. Hi, ji, Hi. Mansi ji. Is it Manasi or Mansi? Mansi. Okay. Manasi. Yeah. Okay. So hi, I'm Mansi. My mom and dad both are Kashmiri, but my dad's side of the family is a non-Kashmiri speaking family. So I grew up not listening to much of the language. Your mother's family. Mother's Your mother family tongue. mother's family speaks Kashmiri, but then now I'm already working and settled in Goa. So I don't have anybody who I can talk to. So, or plus I didn't learn much when I grew up. So now I really want to make an effort to learn my mother tongue. And at least to my mom, then I would be able to talk in Kashmiri. Okay. So, Great. yeah. Great. Yeah, that's it. Welcome to Yeah, Kosam. thank you for this initiative. Thank you. You, Aryan ji, namaskar. Hello. Namaskar. Hello. My name is Aryan. So I want to learn Kashmiri because my dad is Kashmiri from Renawari. And basically his whole family, my grandparents and all, they talk to each other, and I was never able to understand. And as a kid, I was not that interested also because I was like, Hindi mein kaam chal raha hai mera. But as now I've grown older, I've realized that whole part of that whole culture I've missed out on. So Meri Bua ne, she sent this link of these classes, so I joined. Okay, So great. just one short disclaimer. I'm also based in Goa. So if I start in the middle of Kashmiri saying some weird words like Asa or Bore, like that's Konkani getting mixed with Kashmiri, because I have a tendency to do that sometimes. It's all right. Yeah. We respect all the languages, so it's all right. कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे कोंकणी सीखेंगे. ठीक है. Looking forward to the classes. Yeah. Great, thank you for joining, Aryan. I was saying that Kashmiri और कोंकणी दोनों cases start होती हैं तो. Equal basically. बिल्कुल. So welcome, Sadhna ji. Namaskar. Hello, Sadhna ji. आप म्यूट पे हैं शायद, साधना जी. ओके, चलिए जब तक साधना जी आती हैं, सृष्टि जी आप आ गए घर. हाँ जी, नमस्कार. नमस्कार. So I am from Delhi NCR, and yes, the reason why I want to learn Kashmiri is because I can speak Kashmiri but not that well. My grandparents used to communicate with me in Kashmiri, and my mother knows a bit of it, but again my father's side, they do not speak Kashmiri at all. So that is the reason why I want to learn this, just to keep the language, in tight even in the coming years. Okay, great, good to know. Welcome. Thank you. So I believe that everybody has joined. Somebody's raising hand. Sadhna ji. Hello. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Hello.
तो साधना जी साधना जी यू आर ऑलरेडी अलाउड टू अनम्यूट, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है अनम्यूट के लिए, और मैंने आपको रिक्वेस्ट भी भेजा है टू अनम्यूट. I think she is trying to join us back. She is trying to join again. Yeah. Yeah. Can I? Yes. Can you hear me? Yes, I can. Yeah. Sadhna I ji. think some technical issue. No So yes. problem. So let me just give my introduction. My name is Sadhna, and basically I'm married to a Kashmiri family. So yes. Yeah. Can you hear me now? Yes, yes, yes. So I'm married to a Kashmiri family, and yes, so that is one of the reasons that I want to really learn this language. And yes, and you have given such a great platform for a non-Kashmiri, I mean, people who can actually learn this language. So I hope so. Like I'm looking forward to have more amazing session by you. Yeah, that's it. For sure, this will be fun. As I was saying that we all are family, Kosam family. So welcome to our family. Yeah, thank so, you. यहाँ पे सब लोग at par हैं, be it Kashmiri or non-Kashmiri, because everybody is here to learn. So don't worry Yes, about yes. it. But yeah, thank you very much for joining and recognizing Kosam platform as a non-Kashmiri to learn Kashmiri language. Yes, yes. So I welcome you all once again. Welcome to Kosam Koshur Samanbal. और थोड़ा सा मैं आप, because this is a meet and greet session, तो थोड़ा सा मैं आपको हमारे बारे में बताती हूँ कि कोसम क्या है और कैसे हमने शुरुआत की. और उससे पहले because it might be raised कि हम, क्योंकि हम कश्मीरी क्लासेस लेते हैं तो हम कश्मीरी में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जैसा कि आपने देखा मिक्स्ड पॉपुलेशन है, नॉट एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद कश्मीरी लैंग्वेज. काफी सारे लोगों को आप में से हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी ट्राई टू टॉक एट लीस्ट इन फर्स्ट फ्यू सेशंस इन अ लैंग्वेज वेयर एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. धीरे धीरे जब आती जाएगी कश्मीरी तो हम फिर ज्यादा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस कश्मीरी का ही यूज करेंगे फॉर टीचिंग. तो let me share my screen. एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, ज्यादा बोरिंग नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत अपने बारे में बताने के लिए, कोशर समनबल के बारे में. आई होप आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं. It's unmute. They can hear you. So हाँ, please keep yourselves on mute if you have to avoid background. Okay. तो कोशर समनबल actually is Kosam. Kosam is the short form. कोशर समनबल का मतलब होता है, समनबल का मतलब होता है meeting and greeting place where we can come together and meet. कोशर समनबल is like कश्मीरियों का meet and greet place. तो इसका नाम हमने इसलिए ऐसा रखा because we thought that we require a place wherein every one of us can meet and we can talk about Kashmiri language and culture. तो बहुत ही कैजुअल सेशंस रहते हैं हमारे, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, लाइक वी ऑल आर लाइक अ फैमिली हियर. तो हम लोग बात भी उसी तरीके से करते हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हीं बातों में वी टीच कश्मीरी लैंग्वेज, द बेसिक्स ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, लिखना और पढ़ना और बोलना. तो हम लोगों ने अपनी जो क्लासेस है वो दिसंबर 2020 से स्टार्ट की, और अभी तक ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे सर्टिफाई हो चुके हैं थ्रू कोसम. अबाउट द फाउंडर, तो जो कोसम है इज एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड ऑफ रैना अंकल, जिनको हम मास्टर जी भी बोलते हैं, एम के रैना. इन्होंने हमारी कश्मीरी लैंग्वेज पर बहुत सारा काम किया है, और इनका जितना भी काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच वन ऑफ अस इज अवेलेबल.
ड्यूरिंग द सेशंस मैं आपको इनकी वेबसाइट और जहाँ जहाँ पे वो हैं, जैसे कि अभी आप में से कोई लोग पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आई कैन शेयर दोज लिंक्स विद यू सो दैट के यू कैन गो थ्रू दैट. बट once you are well versed with how to read and write Kashmiri language, so you can go through that and you can really learn more about the Kashmiri literature. तो इनका ये ब्रेन चाइल्ड था कोसम एंड ही स्टार्टेड ऑफ दिस विद मी एंड हम लोगों ने बोला कि चलो लेट्स डू समथिंग फॉर द लैंग्वेज बिकॉज हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे जो यंगर जनरेशन है हमारी दे डोंट रियली आर वेरी मच कीन or they are not really speaking Kashmiri. I will not use the word keen because बहुत सारे बोलना चाहते हैं but for some or the other reasons they are not able to. So we started this venture. और जैसा कि मास्टर जी हमेशा बोलते हैं कि Zoom Vandamai sounds much better than I love you. So it's always your mother tongue that touches your soul. हमारी जो टीचर्स हैं, हमारे 2 टीचर्स हैं, करुणा जी जो कि रिटायर्ड कश्मीरी टीचर ही हैं. वो 1990 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कश्मीरी सिखा रही हैं. 2016 में वो न्यूजीलैंड गई और वहाँ पे भी वो अभी कश्मीरी की क्लासेस लेती हैं. वो यूजुअली हमारा मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करेंगी. और कुलदीप जी हैं, वो हमारे साथ 2020 से ही एसोसिएटेड है. उन्होंने मास्टर जी के अंडर कश्मीरी लैंग्वेज सीखी है, रोमन, नस्तालिक और देवनागरी तीनों स्क्रिप्ट्स में. और वो हमें मास्टर जी को असिस्ट करेंगे इस बैच के लिए और ये हमें इवनिंग में हमारे सेशंस देंगे. तो मॉडरेटर इज मृणालिनी दीदी. Again, she will be there in the morning and convener, I am convener. My name is Shivani. You can call me Zipni also. And I am actually founder and creator of Kashmir as it is as well. तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है just to preserve Kashmiri culture. और I will be there with you guys in the evening sessions. और हमारे 2 और वॉलंटियर्स हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है इस सेशन के लिए, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस देम. एक मधु रैना है और एक है कुसुम जी. कुसुम जी आपने इनकी स्टोरीज सुनी होंगी, द बटनी की स्टोरियां जो कश्मीर एज इट इज में आती रहती हैं. विद दिस थॉट 2 मिनट के लिए आई विल रिक्वेस्ट मास्टर जी बिकॉज वो हमारे साथ हैं इस टाइम पे टू से फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू. मास्टर जी, ओवर टू यू. 2 शब्द. सुबह भी आपने मुझे मजबूर किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं आप जानते हैं, लेकिन मैं कश्मीरी सिखाने का काम 1995 से कर रहा हूँ बॉम्बे में 100% जान. और ये कोविड की वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, जूम प्लेटफॉर्म पर, थैंक्स टू शिवानी जिसने इंट्रोड्यूस किया. तो अभी तक कुल मिलाकर अगर लेसन जो हम फिजिकल लेसन देते थे और उसमें जूम को मिला तो कोई मेरे ख्याल में 700-800 तो हमने पढ़ाई होंगी अभी तक. तो अभी हमारे पिछले सेशन में और उससे भी पिछले सेशन में नॉन कश्मीरी थे, मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया, जिन्होंने इतनी अच्छी कश्मीरी सीखी कि उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास. अगर आप सुनेंगे या आगे शायद शिवानी जी सुनाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कश्मीरी नहीं है और उसने ज़बानी याद करके नहीं बोला है, वो पढ़ रहा है और बोल रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ने में कितना मज़ा आता है. जनरली जो भी वर्ल्ड वाइड जहाँ कहीं भी कश्मीरी क्लासेस हैं वो सिर्फ सिलेक्टेड सेंटेंस से 200, 300, 400 सेंटेंसेस हैं जो रट लगाते हैं और उनको याद कराते हैं. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. कोसम में आपको लिखना और पढ़ना पहले सिखाया जाता है, उसके बाद बोलना. तो ताकि जब आप अकेले हों और आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं हो, तो आप आपका ही लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ पढ़ सकते हैं और ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं. हमारे पिछले सेशन में एक लड़की थी, मेरे ख्याल में ब्रिटेन से थी वो. शी वुड से कि मैं अकेली घर पर हूँ और बिल्ली के साथ कश्मीरी में बोलती हूँ. And we greet you all here on Kosam platform. लेकिन मेरी एक विनती है कि जो लोग नॉन सीरियस हैं, जो सीरियस नहीं है कश्मीरी सीखने के लिए,
क्या होता है कि 60, 70, 80 ज्वाइन करते हैं और जब एंड सेशन आता है तभी 20 या 25 रह जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये हमारे सीखने की चीज नहीं है, क्या फायदा है इसका, फिर के बाद में क्या करना है कश्मीरी सीखकर। तो वो पहले से ही सोचना चाहिए, जो सीरियस है वही कंटिन्यू करे, और जो सीरियस नहीं है उनको आने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं कि हमारा मतलब क्या है बोलने का। दिस इज सीरियस थिंग, हम फ्री करा रहे हैं, ये जो पूरी टीम है फ्री करा रहा है, हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये फ्री करने में आपका फायदा होता है तो हमें खुशी है, लेकिन अगर नॉन सीरियस है, जो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो उससे हमें तकलीफ होती है। थैंक यू। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। तो जैसा कि मास्टर जी ने बोला, यस, हम लोग वी टेक वेरी वेरी सीरियसली होमवर्क स्पेसिफिकली या असाइनमेंट्स जो आपको एवरी लेसन के बाद दी जाती हैं, और उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रिसाइट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको कश्मीरी आती जाएगी। तो अभी मैं आपको डराती नहीं हूँ, बट स्टिल आई वुड से कि बाय द एंड ऑफ द 16 सेशंस देयर विल बी एन इवैल्यूएशन। वो इजी भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना ध्यान दिया। ठीक है, तो आगे चलती हूँ। मैं आपको थोड़ा बहुत इन क्लासेस के बारे में बताती हूँ। जो ये जितनी भी क्लासेस हम होस्ट कर रहे हैं, दीज ऑल विल बी रिकॉर्डेड, और हम लोग इनको पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप से फॉर एग्जांपल क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग सेशंस। वो 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाते हैं, मोस्ट लाइकली तो 1 ही दिन में, अदरवाइज 2 दिन में तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा। होमवर्क जरूर करें, असाइनमेंट जो भी आपको मिला है उस सेशन के बाद वो जरूर करें, और अपना असाइनमेंट सबमिट करें। सबमिट किसको करना है? जो आपके ये रहेगा, आपका सेशन रहेगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किसके पास आप उसको सबमिट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जब क्लास चल रही होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज कीप अ सेपरेट नोटबुक एंड पेंसिल विद यू ड्यूरिंग द क्लास, so that if there is anything that you have to note, या आपको कुछ पॉइंट्स पूछने हैं इंस्ट्रक्टर से, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क देम। और जो भी आप प्रैक्टिस एक बुक बनाएंगे, वो प्लीज आप अलग ही रखिए कश्मीरी की। डोंट यूज जस्ट लूज शीट्स और समथिंग लाइक दैट, so that as Master Ji said, we need you guys to be as serious as possible, so that कि ये जो journey है undoubtedly enjoyable भी हो, but at the same time you also learn something from us. और हमारी जो classes हैं, that will be 10 a.m. to 11 a.m. IST, one session, and other session is 6 p.m. to 7 p.m. IST. तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कि बिजी हैं मॉर्निंग सेशन में, तो इवनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या इवनिंग सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मॉर्निंग सेशन में भी आ सकते हैं। तो यू कैन डू दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर सबमिटिंग द होमवर्क, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब मैं आपके साथ एक पोएम शेयर करूंगी विच इज समथिंग इम्पोर्टेंट। लेट मी शेयर साउंड एज वेल। ये जो पोएम है, ये मास्टर जी ने लिखी है। इस पोएम की क्या खासियत है कि इस पोएम के अंदर 6 peculiar vowels हैं। अभी जब आप फर्स्ट लेसन में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कश्मीरी लैंग्वेज में, apart from the alphabets, Roman and Devanagari alphabets, we have 6 peculiar vowels, जिनको हम vowels बोलते हैं, कश्मीरी vowels specifically। उनके आपको जो है जो मास्टर करने के लिए प्रोनाउंसिएशन, ये पर्टिकुलर एक पोएम बनाई गई है स्पेसिफिकली। तो इफ यू विल रिसाइट दिस पोएम, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिसाइट और क्लियरली प्रोनाउंस दोस वॉवल्स। तो एक बार ये सुनते हैं, बाद में मैं आपके साथ ये सारा शेयर करूंगी डॉक्यूमेंट, तो फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं टिल आवर नेक्स्ट सेशन। रनि गए मालिन पीरित शीरित म्यानिस बाथस बेय लज हर कूताह बर बर को अक खारक वल बे पानस ख्यावत वर वल बे पानस ख्यावत वर। आई होप आप लोग सुन पा रहे हैं। यस, यस, ओके।
और yeah. Michu Navrian Shrena Bucho 6 years old. Buchos Gavan Rain Gain Malun. Rain Gain Malun Purit Shirit. Manis Bathas Belai Jhar. Ko tha bar ko akkarak. Valbe panas khyavatvur. जी, तो ये एक पोइम है जो मैं आपको बाद में भेजती हूँ। आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिसाइट करने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलें 18th को, तो फिर हम सुनेंगे आपसे कि आपको कितनी आई। ठीक है, तो ये this is all about classes and all about the sessions. Any questions before I hand over to our teacher Kuldeep ji for his comments, and any questions from anyone? We're supposed to have like one lesson per week, or Yes, one lesson per week. And it's supposed to be as a course of 16 lessons. Yes, correct. Okay, thank you. Yeah. Any other question? And this is specifically in Devanagari and in Roman. Any other question from anyone? Okay, great. So, Hi. yes. नमस्कार sorry इनको इमन है क्या मिले थी मतलब because of her Angri's put any lyrics हाँ, सब I will send it to you. हाँ जी, Angri's I will put send so it. that when she's reciting it she will recite in Kashmiri but at least written तो अंग्रेजी होगा ना जी बिल्कुल, because we are using both the scripts, Roman script as well as Devanagari script, तो आपको दोनों मिल जाएंगे. Not a problem. Thank you. No problem. Any other question? Anything from anyone? ठीक है, तो I will hand over the mic to Kuldeep ji. Namaskar. Namaskar, everybody. Sort of mixed English and Hindi because I think we have some people who can speak only in English और बाकी लोग तो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ पा रहे हैं. जैसे शिवानी जी ने बोला कि मैंने कश्मीरी लिखना और पढ़ना, बोलना तो मैं जन्म से जानता हूँ, लिखना और पढ़ना 2020 में सीखा मास्टर जी से. And I'm happy that he has given a go ahead that I can now teach somebody this Kashmiri language. So we basically, I'm a professional. I have been in industry manufacturing, hardcore professional for 40 years, nothing to do with literature, arts, anything. So now I think जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई मुश्किल आती है तो अपॉर्चुनिटी भी आती है. तो कोविड की वजह से जब everybody was sitting home and I heard about Kosam and I started learning to read and write because earlier in our school time we never were taught to read and write. We used to school. We didn't have any script to teach Hindi, Kashmiri in schools. So अभी मैंने सीख लिया है और I'm sure it's going to be fun with all of you. जैसे हमने अभी शुरू किया, मास्टर जी की हमने एक रैम सुनी, and we will have opportunity to share such rhymes from the previous classes. जैसे मास्टर जी ने भी बोला, कुछ साउथ इंडियन थे, कुछ फ्रॉम अब्रॉड थे, जिन्होंने कभी भी कश्मीरी बोली नहीं है. वो कश्मीरी थे या नहीं थे, बहुत बच्चे थे, कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल दो तो इसी ग्रुप में आज देखे हमने, देवांश और वत्सल को हमने भी देखा और बहुत अच्छा पिकअप किया. ओनली थिंग व्हाट वी रिक्वायर इज फ्रॉम यू इज दैट just 1 week, it is not very tough, 1 hour to spare for the session and probably 1 or 2 hours to sort of rehearse and practice at home and submit the homework, and then you have a lot of time to practice with anybody who's speaking Kashmiri. Don't worry about कि मेरे को पूरी कश्मीरी आती है कि नहीं बोल पाते हैं, because क्या होता है, संकोच करने से आदमी सीखता नहीं. The first thing is that you should not be afraid. जैसे actually शिवानी जी ने सर एक सेशन में बोला था कि there are people who speak German who speak English, and if you are a pure English, you say what nonsense, what rubbish he's talking. You know, he doesn't know how to speak English. So same way ऐसा भी हो सकता है कि you feel कि नहीं
I don't know Kashmiri, but the way I'm speaking, it is very, it's not very pure. There's nothing like pure in language. So what I would suggest है कि आप practice करते रहिए, जैसे भी आप कर सकते हैं. Whether it is मतलब even if there are injections with हिंदी है, English है, या कोई आप मराठी हैं, जैसे कोंकणी अभी बात कर रहे थे, तो कोई भी लैंग्वेज आप साथ में कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. Because idea is to pick up those words, special words. So once you start doing that, then the whole thing becomes very easy. And जैसे शिवानी जी ने बोला और मास्टर जी थोड़ा स्ट्रिक्ट है मेरे से, तो लेकिन एक चीज हम करेंगे, we will try to make this session very funny. That means fun to learn, not that we are not serious about it. But what we say is that we can have the sessions जिस तरीके से आप समझ भी पाएंगे, and we should be free to talk about Kashmiri. I think that's very important. We are not here very formal about this thing. Only thing is discipline while conducting classes is imperative. But otherwise, anywhere we are all available. This Kosam team is a voluntary group, and we don't charge anything to anybody, and we do it out of our own passion for the language. So please feel free to contact any one of us at any point of time individually for anything you require. So don't worry about that. You can always message us, and those numbers are already available. And in any case, the group is available, and Shivani ji will keep telling you, updating you on the group, to whom you can send your homework, with whom you can talk, what you can do. तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इसमें. And I'm sure by the end of मैंने सवेरे सेशन में बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि by the end of the session we expect कि one of the teachers comes up from this group for our next session. I think that would be great for us. That will be an achievement for this Kosam team who are doing this little bit whatever we can. So I am very happy that some people who are married in with Kashmiris, or some of the Kashmiris who are in families but still don't speak Kashmiri because whatever the reason, maybe we have been away from Kashmir itself. So I think by the end of the session, I'm sure कि सब लोग कश्मीरी बोलेंगे और अच्छी तरीके से बोलेंगे, और हम सबसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करवाते रहेंगे आपके वॉइस की, जो कि दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, एंड यू विल लव टू हियर योर वॉइस. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. So I'm sure that we'll do a lot of good job together, and wish you best of learning. I should say, let us together make this effort कि हम लोग 16 session के बाद मास्टर जी को सरप्राइज करेंगे that we have learned Kashmiri as he would have loved us. Thank you, everyone. Thank you, Guldeep ji. Any other question from anyone? Because I think then we can close a call early. So, any other question? Okay, I have a question. Like after the session gets over, after 16 session, so the assessment will be on the last day or any particular? No, last day after 16 session. Okay, and written and oral both will be included. Okay, both will be included. Okay. We have a unique way of taking assessment. Okay, fine. That's great. Thank you. No problem. Basically, जैसे मास्टर जी ने बताया, we not only teach how to speak, we also teach how to read and write. तो उसमें फायदा ये कि we'll have an evaluation accordingly, so that आप बोल भी पाएं कि किस तरीके से प्रोनाउंस करना कोई कश्मीरी वर्ड, और कैसे लिख पाते हैं या पढ़ पाते हैं बाद में जो भी लिटरेचर अपने हाथ में मिलेगा. So we should be able to read that. That's all right. Thank you. Okay, thank you. और कोई question और कोई बातचीत from anybody? We still have time. हाँ जी, मीनाक्षी. Okay. Anything else? Anyone? Okay, चलिए. So we expect to see all of you. Just one more thing. I think आपने उनका notebook के बारे में कि that every session they have to write their name and roll number on the top. So will be assigned a roll number for each one. So for us to understand and keep record, you will have to write for everything, whatever homework you will submit as a photocopy. Please write your name and roll number on top, so that we are able to understand who this gentleman or lady is, or who child is. बिल्कुल. तो रोल नंबर्स के लिए भी जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग कुलदीप जी. रोल नंबर्स के लिए भी आई विल सेंड यू just a quick form
तो वो फॉर्म भर दीजिएगा ताकि उससे हमें पता चले कि आप क्या कौन से स्टूडेंट्स ने आज अटेंड किया, एंड वी विल अलॉट यू अ रोल नंबर, और वो रोल नंबर हमारे टिल द एंड तक काम आएंगे, 16 सेशंस तक. एज आई सेड, एवरी होमवर्क विल बी इवैल्यूएटेड, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और उसके बेसिस पे फर्दर हम आपकी इवैल्यूएशन चलती जाएगी. ठीक है. एनीथिंग एल्स? एनीवन वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, मीट एंड ग्रीट सेशन. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, एंड वी होप इट विल बी अ वेरी नाइस जर्नी विद यू ऑल, एंड बाय द एंड ऑफ 16 सेशंस हम सब कश्मीरी में ही बात कर रहे होंगे, जो हमारा क्लोजिंग सेशन होगा उस दिन. ठीक है, चलिए, नमस्कार. नमस्कार एवरीवन. Thank you and namaskar everyone.